Hello everyone, welcome to BYJU'S Exam Prep. I'm Ruindeep Kaur and I welcome you all in today's session where we will be discussing, the detailed exam analysis of one shift that has happened at Narsi Munji entrance test of NPAT, right? So I am going to discuss that with all of you. Having that being said, a quick yes would let me know whether I'm audible and visible to you guys perfectly. Good, good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you. Am I audible? Am I visible to all of you? Hello, Panda. Hello. Good afternoon. Okay, so I got a thumbs up from the team and we can start today's session. Okay, perfect. So, in today's session, as I already told you, we're going to discuss, what type of questions have been asked till now in the exam of Narsi Monji in PAT. And also, we're going to have a discussion on, what is the expected cutoff for these particular shifts. As the exam is still going on, you still can appear for this exam if you have filled the form. So I would want you guys to ask your questions if you have any regarding this. Hello, Lakshika. Yes, after so long, and it's so nice to see you guys here. The basic overview of the exam is that it is an online center-based test. You have to go to the center. It is going to be a computer-based test. Online होने वाला है, ठीक है? There are three number of sections of 40, 40, 40 questions each and a total of 120 questions. Total marks are 120. There is no negative marking. You can get minimum of three choices or maximum of five choices. Yes, multiple choice question may usually there are four choices. But in this particular exam, some choices there were only three choices or you had five choices to choose your answer from. So multiple choice questions, absolutely. However, the number of choices or options were varying from 3 to 5. 100 minutes का एग्जाम है सो वेरी क्लियरली नार्सी मुंजी यूजुअली ऐसे ही ये एग्जाम होता है आपका 100 मिनट्स का एग्जाम होता है 120 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है एंड आई ऑलवेज ट्राई टू टेल द स्टूडेंट्स दैट यस दिस इज अ हिंट फॉर यू that you cannot complete each and every question if you want, even if you wanted to. 120 questions cannot be completed in 100 minutes. So, it is an advice to all of you that if you're going to appear for Narsi Munji for the next few days, make sure that you are choosing the questions which are easy to medium level, which you know how to solve. And because there is no negative marking, so if you do not know any question, feel free to mark the answer. That is the basic strategy, right? But इसका मतलब ये नहीं है कि हर option में तुक्का मार कर आना है. No. So the strategy is you have 100 minutes. It is perfectly possible for you guys to go for 95 plus questions. You can attempt almost 90 to 95 questions in NRC Monji. Yes. However, having that being said, you have still 20 questions ka choice. And because there is no negative marking, if you come across a question that you know you cannot solve, either because of the time constraint or you do not know the answer, you can mark the answer because there will be no negative marking. So that is one tip for today's session for all those students who are going to prepare for NARSI. Cut off Mumbai campus BBA. Arey wow, Lakshika, straight to the point. We're going to go and discuss that as well. So the important dates, the application form, as we already, had updated you, they were available from 23rd of December. The registration started on 25th of December. The registration is still going on and till 5th of June, you can still register for Narsimon, right? So if you want to go for NMIMS, you can still register for it because the registration is going on till 5th of June. कंडक्ट हो रहा है ये एग्जाम 1st of April से till 10th of June. So till 10th of June, you can schedule your test timing. And that is one of the most flexible things that Narsi can give you. ठीक है? Having given the flexibility of no negative marking.
तो अगर आप जाना चाहते हैं नारसी मोहन जी के अंदर, तो एक बहुत अच्छी चीज आपके सामने है दैट यू कैन स्टिल रजिस्टर फॉर इट इफ यू हैवंट, यू कैन स्टिल गो एंड स्केड्यूल योर एग्जाम डेट। तो एक बहुत अच्छी चीज है, रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होगा विल लेट यू नो अबाउट दैट। ऑल्सो दिस संडे, that is 7th of April at 2 p.m. I'm going to give you a free mega workshop about CUET, that is Central University's entrance test. I'm going to tell you about the pattern, I'm going to tell you about the syllabus and the eligibility criteria, what are the top universities, what are the courses covered, right? We're going to have a discussion on that, and I'm going to take all your doubts regarding the form filling. So make sure you go and register for this free mega workshop right now, because I'm going to take all your queries regarding CUET in this particular free mega workshop. Ma'am, is dice cube cuboid coming in NPAT? Akash, in this particular exam, जो भी important topics आए हैं अब तक, I'm going to show them to you in next few slides. तो थोड़ा सा wait करिए. However, सिलेबस में है डाइस क्यूबिन क्यूबॉइड, पूछा गया है या नहीं मैं अभी आपको कुछ देर में कंफर्म कर देती हूँ। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का मॉडरेट लेवल आया, बहुत डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं थे। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल आया, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफी मॉडरेट लेवल आया है। हेलो आदित्य, आई एम डूइंग वेल। So the level of exam overall is moderate. So when I say moderate, that means having a choice of almost 20 questions out of 120. It was very easy for students to attempt many questions, and in fact attempt 120 overall. Even if you did not know the answer, you still had a chance of getting a question correct that you did not know the answer to, because there is no negative marking, right? So that way the exam was very moderate. Now, one very important key highlight of this exam was that examination had a time wise limitation. There was no sectional timing. You had like no, you could be given 60 minutes to quantitative aptitude, but that was not there. But there was one thing which was very important. Let us say you started your exam with English ka section. You gave 20 minutes, you attempted like 25 questions, and you thought, Arey, I'll come back to the remaining 15 questions to attempt. But that was not happening. Why? Because once you have moved to other section, you cannot come back to the previous section. So there was a section limit, not sectional time limit, but section wise limit was that you cannot jump to and fro from different section. आप LR पहले करने के बाद कुछ क्वेश्चन छोड़ के वापस LR पे नहीं आ सकते। तो अगर आपने LR का सेक्शन ओपन कर लिया है, आपके सामने 40 क्वेश्चन है, तो आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन इसी बारी में करने, चाहे आप इसके लिए 20 मिनट्स ले लो, चाहे आप इसके लिए 60 मिनट्स ले लो, राइट, डजंट रियली मैटर। बट अगर आपने सेक्शन स्विच करा, यू कैन नॉट कम बैक। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर, बिकॉज दिस काइंड ऑफ शुड रिफ्लेक्ट इन योर स्ट्रैटेजी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनपैट। ये स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। नंबर ऑफ चॉइसेस 3 to 5 वेरी हो रहे थे, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर एज वेल। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। बट मैम, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द सेक्शंस वी हैड अ चॉइस टू रिव्यू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस। यस, इन द प्रीवियस फ्यू जब आपके कुछ प्रीवियस जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई हैड दैट वर्ड ऑन द टिप ऑफ माय टंग। तो आपके कुछ इनिशियल डेज में ये हो रहा था, अब नहीं हो रहा है लक्ष्य का, ठीक है। तो आपके इनिशियल कुछ स्लॉट्स जो थे एग्जाम्स के, तब ये हो रहा था, अब इट इज नॉट हैपनिंग। आई होप दैट इज क्लियर विद एवरीवन हु इज गोइंग टू अपीयर। सो इट इज इक्वली पॉसिबल कि शायद फर्दर कुछ ऐसे एग्जाम्स होंगे जहां पे सेक्शन जो है वो आपको स्विच करने दिया जाए, बट इट इज इक्वली पॉसिबल दैट दे डू नॉट लेट यू कम बैक टू द सेम सेक्शन अगैन। So it is possible both the ways, because ये एक ही बारी में हुआ है। But ma'am, after, okay, can you please check the last date for the exam? It might be later than the 5th of June. Yes, it is 10th of June. We just discussed that. Registration is 5th of June, right? Registration and the number of slots that you want to take, or it was in mine.
या लक्षिका, ठीक है. सो लाइटर्स, आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है. That is 10th of June. We have discussed that. Now, guys, if you are preparing for CUET, you are very worried about कि journal section कैसे होगा, मुझे किस तरह से बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है. आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है फॉर CUET अंडर ग्रेजुएट 2022. हम यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन एंड हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से आपको कौन से सेक्शन को यू नो तैयार करना है, with explanation of what can come in exam. So we are going to prepare you for that with the live classes, with doubt sessions, and with quizzes and sectional tests and all of that. So if you want to know more about this, you can call us on 88061304 and 14. And अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक है इसी कोर्स के लिए, आप उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं. ठीक है. माइट बी लेटर देन 10th ऑफ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट लाइचर्स. अभी तक 10th ऑफ जून के बारे में ही गिवन है. तो अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें ना लाइचर्स, 1st ऑफ अप्रैल टू 10th ऑफ जून काफी लॉन्ग टाइम फ्रेम है ना. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू नॉट गेट डिलेड, बट अभी तक 10th ऑफ जून है. हम जर्नल तो इजी है, डोमेन में प्रॉब्लम है, उसका क्या करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइचर्स, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर डोमेन्स, ठीक है, एज ऑफ नाउ बायजूस एग्जाम प्रेप पे हम आपको डोमेन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश के अलावा. हाउएवर आप क्या कर सकते हो, आप प्लीज एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो आपको 12th क्लास में जो आपने पढ़ा है वही सब्जेक्ट के लिए अलाउ कर रहा है. क्लियरली जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका डोमेन भी प्रिपेयर हो रहा है. ठीक है. तो मेरा एक ही आपको सजेशन होगा कि जो सिलेबस गिवन है एनटीए की वेबसाइट के ऊपर, मेक श्योर आप एनसीईआरटी से वो सिलेबस दोबारा से देखते हैं, और जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है, यू आर वेरी लेट अस से यू वांट टू गो फॉर मैथ्स, तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है एटलीस्ट आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो. फाइन. डज रजिस्ट्रेशन, यस यस महेश, रजिस्ट्रेशन बहुत देर से स्टार्ट हो चुकी है फॉर नरसिमोन जी. तो आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हो. लास्ट डेट है 5th ऑफ जून. ब्लू, वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सही. मैम कैन वी चूज सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट. अरे अरे अरे, ओ माय गॉश, आदित्य, आप इसी की बात कर रहे हो इन दिस पर्टिकुलर, नरसिमोन जी. ठीक है. सो आदित्य, सबसे पहली चीज तो आप मेरे हिसाब से एक सेक्शन चूज कर सकते हो. स्विचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम एनपैट की बात कर रहे हैं, एनपैट के अंदर जो इनिशियल आपको इंफॉर्मेशन आती है ना, गाइडलाइंस आती है, आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसके अंदर आपको उस स्पेसिफिक डेट के स्लॉट की इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है. तो अभी तक मान के चलो कि आप सेक्शंस को चेंज नहीं कर पाओगे. ठीक है. सीयूईटी के लिए संडे को आई एम डूइंग अ वर्कशॉप, यू कम देयर एंड आस्क योर क्वेरीज ओवर देयर. ठीक है. सम मेन आर कॉप्स, ऑल कॉप्स आर ब्रेव. Okay, so Lychus is asking me a doubt. Lychus, after just if this is completed, let me try and answer that. Okay, इसको दोबारा से मैं आपसे पूछूंगी. तो इनफैक्ट का गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखो कितना कम है. सो ओवरऑल इतना ही एक्सपेक्टेड है आपसे, अराउंड 65 to 70. तो गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का मतलब है करेक्ट आपसे इतना एक्सपेक्टेड है. ठीक है. दिस इज द करेक्ट एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ द 120 क्वेश्चंस. हाउएवर गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 120 है भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. डू नॉट फॉरगेट दैट, राइट. सो करेक्ट, अगर आप कुछ 70 के आसपास करेक्ट करके आए हो, यू हैव डन गुड. So that is a good number of attempts. Approx how many students are giving NPAT this year? आकाश, अभी तक इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ. ठीक है. I don't have the information on this. तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी. हाँ, शायद आफ्टर द लास्ट 5th ऑफ लास्ट एग्जाम ऑन 10th ऑफ जून, शायद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें पता चले. ओके. तो सिंप्लीफिकेशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 5 क्वेश्चन के आसपास सिंप्लीफिकेशन आया था. ठीक है. सर्ड्स एंड इंडाइसेस के ऊपर एक क्वेश्चन, फ्रैक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन, ट्रिग्नो के ऊपर
6 क्वेश्चन, स्टैट्स के ऊपर 4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के ऊपर 3, फंक्शंस के ऊपर 1, सेट थ्योरी के ऊपर 6, पाइप सिस्टम्स के ऊपर 1। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये जो हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन अब नेक्स्ट वाले स्लॉट में 1 हो जाए, सर्ड्स 3 हो जाए, फ्रैक्शन 2 हो जाए, तो ये नंबर ऑफ जो सेक्शन के टॉपिक बता रही हूँ मैं आपको, ये इम्पोर्टेंट है। तो यू वांट टू कीप दैट दिस इनटू माइंड। अगर इनमें से ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपका अभी तक दोबारा से रिवाइज नहीं हुआ है, my advice to you would be please revise that as soon as possible. Can I choose language English? अरे महेश, CUET राइट? सो लास्ट में ये क्वेरी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, अभी प्लीज एनपैट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके, देयर आर 70 dates with difference time to be selected. You really think analysis? Lights, absolutely no, but you have to understand for a fact that if they have 70 dates with 70 plus different sets, तो different अगर नहीं आ रहा है, if the different sets are not there, have you just noticed? अभी there was a student, ठीक है, अभी लक्षिका ने क्या कहा कि मैम लास्ट में जाके मैं सेक्शंस के अंदर क्या कर सकती थी, देख सकती थी my number of questions attempted, है ना? बट रिसेंटली उन्होंने सेक्शंस के अंदर मूव करना बंद कर दिया है। तो यू डू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर डिलेइंग योर टाइम, so they might come across with different methods of creating the level to be equal. मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपके पास 40 क्वेश्चन है जो मैथ्स के अंदर आने वाले हैं, तो उनके पास कम से कम 200 क्वेश्चन तो होंगे जिनसे वो जंबल अपॉन कर रहे हैं, कम से कम 200 टाइप के क्वेश्चन तो होंगे। तो डिफरेंट 5 सेट तो बना सकते हैं। अच्छा, चलो तुम उतना भी नहीं मानना चाहते हो तो तुम कम से कम 3 सेट तो बनाएंगे, 120 क्वेश्चन तो क्वांट्स के होंगे। बट हैविंग दैट बीइंग सेड, इवन इफ द क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड, ठीक है, सो दीज क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग, ठीक है, इनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो सकता है, इनके टाइप्स चेंज हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन अगर मैं एनपैट के एग्जाम के बारे में बोलूं, आपको देखने को नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलती है। नरसी मुंजी का जो एग्जाम है, जो कितने सालों से चला आ रहा है, बहुत वेरिएशन तो अभी भी नहीं है। तो ये जो हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं, तो अगर आप ये प्रिपेयर करके चल जाओगे, दैट इज मोर देन गुड ना। और हम आपको गुड अटेम्प्ट्स भी बता रहे हैं कि अगर आपकी एक्यूरेसी अराउंड 70 प्लस है तो बहुत अच्छा, ठीक है, इतने एक्यूरेटली अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो बहुत अच्छा, फाइन। इससे ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, बट ये मिनिमम है, इससे कम से आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। Okay, so divisibility and remainders, percentage, time, speed, distance, mixture, allegation, comparison of quantities, straight line, ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आए थे। कुछ टॉपिक्स मैंने पहले बताए, कुछ टॉपिक्स मैंने अभी बताए। नाउ इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 3 पैसेजेस आए। इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नार्सी, ठीक है, आरसी इज समथिंग यू कैन नॉट लेट गो ऑफ। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक पैसेज है जिसमें से आप एक्यूरेट आंसर्स निकाल सकते हो और लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज प्लीज। Okay, Lakshika. So I am going to let Ankur sir know about that as well, right? So we're going to do that soon. Be prepared for that. कि कब वो आता है उसके लिए do subscribe to our channel, right? Has anyone given the first attempt? Yes, Lakshika has given the first attempt. Lakshika, if you do not mind sharing what was your exam like, feel free to let us know, please. Okay. So 3 reading comprehension passages were there. Now this is, I'm talking about one of the exams. I'm talking about one of the shifts, one of the slots, right? So closed test was there, right? 2 passages. So 5 questions from passages. Then para jumble, एक para jumble के ऊपर question था. Error spotting 4 questions. Fill in the blanks 5 questions. Vocabulary, synonyms and antonyms के ऊपर questions थे आपके पास. So this was from your verbal ability. So verbal ability, that means अगर आपने closed test और reading comprehension अच्छे से करा तो 50% of the question was from that. अगर आपने RCs practice करे हैं तो 50% of the questions were from that point. Okay, fine. So अगर मैं बात करूं यहाँ पे, just give me a second please, allow me a second. Yes.
So before I move to the logical reasoning section, if you're going to appear for these entrance tests, which are going to go for BBA, IPM, HM for the year 2023 at BYJU'S Exam Prep, we are giving you a comprehensive course for BBA, IPM, HM with the foundation module. So you do not want to miss this out. Take your free trial if you're going to appear for the next year. So if I talk about logical reasoning, the level of difficulty. Water, image based या visual reasoning question. Have we done these questions on YouTube free sessions? Yes, ma'am. We've done them. Have we done these free sessions on BYJU'S Exam Prep app? Yes, ma'am. If you are a paid batch student, have we done these? Of course, ma'am. So 7 question free के. Logical Venn diagrams. We have done that free के. Very easy questions. Okay, data sufficiency, I've done a separate video on that as well. Statement conclusion, condition based statement conclusion. अल्पा मैम ने आपको क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर कितने सारे सेशंस करे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अल्पा मैम की क्लासेस को अटेंड करा होगा तो 12 क्वेश्चंस फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग एंड दे वर स्ट्रेट, they were not very difficult, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आपका मैथ्स गुड इनफ है तो बार ग्राफ एंड पाई चार्ट के ऊपर 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। मिक्स्ड मतलब बार ग्राफ भी था, पाई चार्ट भी था। टेबल्स के ऊपर तो 444, तो आपका टेबुलेशन इज जहाँ पे आपको एक लिस्ट दी जाती है ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां से आपको परसेंटेज रेशो इस तरह से चीजें जो है फाइंड आउट करके आंसर देना होता है। सो दिस वाज योर रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। Lakshika says the exam was a moderate level, the chapters were same. Thank you, Lakshika. Okay. Do you remember some of the questions? Oh, yeah, we would love to know that, Lakshika. We would love to, because they do not allow you to take your questions, written on your rough sheets. आपके rough sheets वहीं पे हो जाते हैं. So we would love to know about some questions as well. ठीक है, having said that, you will be able to disclose some questions अगर आप चाहते हो. We would love to hear that from you as well. So there were 3 passages, very important. उनके themes थे evolutionary psychology, ठीक है, biological science के background से, decreasing quantity quality of food, ठीक है, advertisement in the age of globalization. So ये passages थे, इनके ऊपर आपको question पूछा गया था. So I've given you few topics that you can discuss जो कि आए हैं actual exam में. And I've told you that be prepared for the extra instructions in the next few slots. अर्लियर स्लॉट्स में आप सेक्शंस के ऊपर इधर उधर जा सकते थे, नाउ दैट क्वेश्चंस आर गेटिंग आउट, ठीक है। तो टॉपिक्स आर आउट देयर, जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे बहुत सारे बच्चों को पता चल रहा है। तो दे आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कि भाई अब तुम मूव नहीं कर पाओगे सेक्शंस के अंदर, ठीक है। सो यू माइट एज वेल प्रिपेयर फॉर अ फिक्स्ड सेक्शन। मैम सबसे पहले हमें क्यूए दिया गया, फिर हमें वीए दिया गया, फिर हमें एलआर दिया गया, अभी तक नहीं है, ठीक है, बट यू कैन एक्सपेक्ट दैट एज वेल। If score 100 plus mark in Ivan, okay, okay, 100 plus, 100 plus, 100 plus. Okay, just allow me a second. So that would be 100 plus will take you to the interview. ATS I'm talking about, Mahesh. 100 plus may take you to the interview, ठीक है, तो आपकी इंटरव्यू डिसाइड करेगी, ठीक है। फ्री सीट, देर इज नो फ्री सीट, यू माइट गेट scholarship based on the eligibilities that IIM offers, ठीक है। trigonometry questions, basic level, boats and streams, time and work, ठीक है, time speed distance, okay. Fine. So yeah, thank you, Lakshika. Fine. So for those students who were asking me about CUET questions, I'm going to tell you that if you have like any queries regarding CUET, Sunday को at 2 p.m. I'm giving you a free mega workshop. You can come and take your queries over there, ठीक है। आपको अगर काउंसलर से बात करनी है आप उनसे कर सकते हैं। And there was this question told by Lighters, some men are cop, okay, some men are cop and all cops are brave. Some brave people are cops. Some brave people are cops. Okay, so Lighters, to be very honest, I do not know about people. I have no idea about people.
तो my answer would be a possibility. My answer would be a possibility. ठीक है? Because sometimes expected cutoff. Lakshika, I told you, I told you that यहाँ पे आपका जो good attempt है वो around 70 है, तो कट ऑफ जो है वो अभी थोड़े दिनों के बाद मैं आपको बता पाऊंगी, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत सारे स्लॉट्स बाकी हैं, ठीक है? वी हैव स्टिल अराउंड अ मंथ टू गो, ठीक है? तो तब तक कट ऑफ का क्या हाल होता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा कट ऑफ के लिए। अभी तक का गुड अटेम्प्ट मैंने आपको बताया, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन होगी ऑफ कोर्स, ठीक है? सो ये मत सोचना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। आपका जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगा। सो अभी के लिए इट वुड बी टू सून अगर मैं आपको कट ऑफ के बारे में कुछ भी बताऊं, ठीक है? ओके, चलो, so I'm going to meet you in the next session, right? So if you want to practice some logical reasoning questions which are of good level, ठीक है, that you want to see in the BBA level exams, you can come to BYJU'S Exam Prep at 4:30. We are going to conduct a practice session जहाँ पे मैं कुछ logical reasoning के questions आपको कराने वाली हूँ. So come meet me there. I'm going to meet you over there. I'll be waiting for you guys. Until then, please take care of yourself. Bye bye, everyone. Can serials realizing in the one side? Depends on the options, Lichess. Depends on the options. I have my NPAT exam tomorrow. Any quick? Amvi, I tried to give you the quick tips that there is no negative marking, first of all, right? And because there is no negative marking, your first, your entire focus should be on going and attempting good, like questions जो आप attempt कर सकते हो, easy and moderate ones. If you come across a difficult level questions, whether it is because of the time constraint, Amvi, or whether it is because you do not know the answer to, my tip to you would be please attempt that. Do not leave that question. There is no negative marking. And another quick tip would be you cannot switch between the sections as of now. आप जिस section को open कर रहे हो उसको completely उसके आंसर्स को कंप्लीट करके आओ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शंस है ट्राई करो उनको 3-4 बारी पढ़ने का। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आता है इन्विजिलेटर से पूछ लो, ठीक है? ओके, so bye guys, take care of yourself and meet me 4:30 on BYJU'S Exam Prep app. Bye bye.